it's Shivangi. Welcome to my channel. This channel is all about creating and trying out new things. So if you're new to this channel, don't forget to subscribe. ओके गाइज, हाँ थैंक यू सो मच यार, इतना प्यार देने के लिए, मेरी लास्ट वीडियो को इतना प्यारा रिस्पॉन्स देने के लिए। मैं बोलूँगी कि आप लोग सीरियसली क्रेजी लोग हो, इतने क्रेजी हो कि मैं क्या बताऊँ। आई पर्पल यू ऑन अ वेरी सीरियस नोट। मतलब मैं इनिशियली सोच रही थी कि मैं BTS की वीडियो 2-3 हफ्ते बाद डालूंगी आराम से सोच समझ के, बट Oh my God! आप लोग का रिस्पॉन्स कितना क्रेजी था। आई हैड टू डू दिस। सो मेरी तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है सोचने में, ध्यान देने में कि आज क्या बनने जा रहा है। एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लव इट, इवन आई एम गोना लव इट। लेट्स सी आगे बनता क्या है, बट अल्टीमेटली जो भी हम बनाएंगे हम उसे यूज कर पाएंगे। हम कोई पेंटिंग नहीं बनाएंगे जिसको हम बस एक दीवार पे टांग देंगे। आई रियली वॉन्ट टू यूज BTS related art. I am sure you guys are way too excited. So am I. आर्मी मिल जाएगी आज एंड कुछ क्रेजी होने वाला है। बट कुछ क्रेजी होने से पहले all you have to do is ignore this mark. Yucks! As you guys already know that today I'm planning to create few key rings. Key rings को directly start करने से पहले मैं बनाऊंगी rough sketch. If you guys are wondering कि मैं बना क्या रही हूँ, so these are the animated characters which were designed by BTS and this is known as BT21. How cute is that? And अब मैं जल्दी से अपनी BT21 gang की outline बना दूंगी because this gang is special. You are special, my child. And now the time has come to cut this BT21 gang because this gang is special and I want to keep it with me. So come on you guys. And now the time has come to finally use our Fevicryl molded clay. Yay! What was that? अब मैं फटाफट से इन दोनों कंपोनेंट्स को अच्छे से मिक्स कर दूंगी एंड देन वी कैन स्टार्ट। ओके गाइस, सो जिससे कि क्ले यहाँ पे स्टिकी ना हो, हियर आई एम यूजिंग अ रेगुलर टेल्कम पाउडर। किसी भी मार्कर की हेल्प से अपने इस क्ले को बेल दूंगी। And once everything is done, now I'm gonna use my rough sketch and अब मैं इसी की हेल्प से एक rough line बना दूंगी अपने क्ले के ऊपर so that I get the exact shape. How cool is that? And now with the help of cutter, I'm gonna give it a very clean shape. सबसे important चीज तो हम भूल गए, which is adding a hole to this keychain. So dry होने के बाद क्ले कुछ ऐसा लगेगा and अब हम इस पे जेसो का कोट अप्लाई कर सकते हैं. So I'm gonna quickly do that and once that is done, I'm gonna start with my rough sketch again. Yes guys, I'll have to do it again. Why? Okay guys, so finally I have a good news to share with you people. Now we can finally start with our painting. Right now I'm starting with Koya, but do let me know in the comment section below which one is your favorite. Like my personal favorite is RJ. I don't know why मुझे वो इतना cute क्यों लगता है. क्यों? After completing man, I'm gonna quickly start working on RJ. By the way guys, do let me know in the comment section below आपको कैसा लग रहा है ये. I cannot tell you, मुझे इतना प्यारा लग रहा है ना इन कैरेक्टर्स को पेंट करना भी, मतलब मैं क्या ही बोलूं. एंड अब मैं जल्दी से टाटा एंड कुकी के भी एलिमेंट्स को पेंट कर दूंगी. Hey you RJ, how are you so cute? Oh by the way guys, मैंने यहाँ पे सारे BT21 के कैरेक्टर्स को कंबाइन करके ये कोलाज बनाया because I really want कि सारे कैरेक्टर्स साथ में रहे हमेशा. Imagine the characters singing हम साथ साथ हैं. Oh my god, अब तो मतलब सारी लिमिट्स क्रॉस हो चुकी है क्यूटनेस की. Each and every character is looking cute except you, Van. Wait, I'm gonna paint you cute. Don't worry. Ta-da! This is what our final piece looks like. This
this is so cute. I feel like eating it. कुछ भी यार. Moving on, अब मैं इन cute little characters के ऊपर डाल दूंगी warnish जिससे कि ये हमेशा के लिए safe हो जाए. Moving on, अब मैं इसमें फटाफट से keychain attach कर लूंगी, which is not a task exactly. And then this is what we have. Just look at my cute little babies, guys. Oh my god. So guys, second piece के लिए भी हम same process को follow करेंगे जिसमें I'll start with a rough sketch and then once that is done, I'm gonna cut it and उसके बाद we will start working with our Fevicryl molded clay. And this process is therapeutic. Oh, hey, did I tell you that here I'm planning to make BTS का logo in a very different way? I'm not sure अगर ये किसी ने try किया होगा, but this is at least what I am planning to do. अब मैं जल्दी से logo का shape दे दूंगी अपने clay को and then we are good to go. I cannot tell you how excited I am particularly for this one because मैंने ऐसा कुछ अभी तक try सच में नहीं किया है. And this looks really good. I am really happy guys. अब मैं फटाफट से अप्लाई करूंगी जेसो एंड इसे कवर कर दूंगी हर एक एक छोटे नन्हे कोने से भी. And once that is done, then we are good to start with our painting. How cool is this? Oh my god. Okay guys, so यहाँ पे मैं यूज करने वाली हूँ gradient and for gradient here I'm using blue, purple and pink color and of course these are pastel colors guys. Dry होने के बाद this is what the BTS logo will look like and I am actually planning to paint on the back side as well because this is looking ugly and I don't like ugly things. I love colorful things and that is why I'm gonna follow the same process and complete the back side as well. You look pretty, my boy. Now I'm planning to add some X factor in this keychain. For that, I'm gonna add some beads here. Do let me know in the comment section below आपको ये idea कैसा लगा beads add करने का. And if you have matching color की beads तो मतलब मजा ही आ जाएगा life में. And moving on, अब मैं जा रही हूँ अपने last piece की तरह which is my third piece. Process भी same रहेगा, theme भी same रहेगी, but हमारा idea different होगा. So this time I am actually planning to make a hand with that heart. So borahe people. Borahi. Anyway guys, I'm really excited for this one as well. जिसे BTS पता है उसे पता होगा इस चीज की क्या value है. I am actually planning to paint this heart in pink color because I somehow feel I love pink color and yeah, like that is the reality. Okay guys, so this is also almost completed. अब मैं इसमें जल्दी से keychain से related सारी चीजें attach कर लूंगी एक string में and then उसको वापस से attach कर दूंगी इसमें. Otherwise अभी के लिए this is just a clay का टुकड़ा. No, seriously. Anyway, I'll just quickly complete these details and ta-da!